Dear students, welcome to this class of mine. This video is based on Analytical Description Part 2. In Part 1, prior to this one, I explained you a very simple and basic bar graph, how it should be written impressively. Now, in this video, I will explain to you how a percentage-wise comparison is made between two groups of activities, or among three groups of activities, or among different kinds of activities. Dear students, if you have not subscribed the channel yet, please do subscribe it, as you will see more and more videos on grammar, writing skills, literature, and creative writings in future. Here there are two pie charts. These two pie charts show a percentage-wise comparison, how students of public schools and students of government schools take interest in different kinds of activities like watching television, cell phones, outdoor sports, indoor games, creative activities, weekend getaways. This chart is for public schools and this one is for government schools. How to start your writing first para? These two pie charts show a comparison how students of public schools and students of government schools indulge in different kinds of activities. This is the opening para. You will start writing like this. According to the latest survey, 23.60% of public school students watch television in comparison to 42.40% of government school students. Let me tell you one thing, percent. You can write together percent and you can write both ways. Percent, yani single word, or percent you can write in two words, I mean. Both are correct. However, the percentage of public school students spending their time on cell phones because of their easy reach or access. Access is the synonym of reach, so you can use this in place of reach to them, is higher than those of government schools. In the former case, it is 52% here, and in the latter, means government schools, it is 31.80%. As regards the participation in outdoor games, it doesn't show or reveal. Reveal is another synonym of show. You can use one of these two. Much difference. It is 7.80%, this one, and 8.50%, this one, in case of public school students, this one, and government school students, this one, respectively. So till now we have compared the percentages of these three segments. Watching television first, second, use of cell phones, third, participation in outdoor sports. Now come to the fourth one. But the participation in indoor games, notices or witnesses, another synonym of notices, a difference of 5%, 11% and 16%, difference of 5%. Which means the students of government schools take more interest in indoor games
than those of public school ones. The interest in creative activities, which are the creative activities like sculpting, photography, painting, etc. By both the categories of students is meager or insignificant. Insignificant is another synonym of meager. Both are good, I mean, you can use one of these two. In case of public school students, it is 3.60, this one. And in case of government schools, it is 1.30% only, this one. The last segment related to weekend getaways, now we are talking about this segment, weekend getaways. Shows or indicates another synonym of shows, you can use one of these two, that the students of public schools only can afford short visits to the spots in their vicinity for relaxation and recreation, whereas in case of government school students, it is absent, it is nil. Because, the reason behind that, because of their socio-economic constraints, it is merely 2% in the former case, though it is only 2%. Now, how to sum up this analytical description, I mean, what you have gathered from these two pie charts, how to write the last para. These two pie charts thus overall present or describe, another synonym of present, you can use one of these two, a picture that due to obvious reasons, the percentage of students watching television and using cell phones is higher than all the other activities, since these two activities, watching television and using cell phones, leave very little time for students to pursue other activities. So now you have completed this analytical description based on these two pies. This is the way you should write an analytical description. Dear students, you must have learned that there are certain important points which you should keep in your mind at the time of writing an analytical description. Let me explain to you these important points. First, understand the given graph or pie chart and make an overview in your mind. Before start writing analytical description, try to understand the given graph or chart and make an overview in your mind how you have to describe it, what it tells you. The second important point is organize the relevant content correctly, appropriately and logically, highlighting the key features. I mean, you have to keep all the key features given in that bar graph or pie chart, and you have to include all the key features. The third point is use a range of good vocabulary with correct spellings. Third point, fourth point, avoid repetition of a word if possible. Never repeat a word. Always try to use synonym of that particular word. When you use synonyms of different words and you try to avoid repetition, that gives a flow and rhythm to that language. It looks worth reading. Examiner will appreciate that. The next point, follow correct grammar and punctuation. Very simple to understand. Next point, use simple, compound and complex sentences with the help of linking words to keep varying the structure of each sentence. This is very important. If you keep making the same kind of structure
in all the sentences, that will not be good, I mean. If you have a good knowledge about all the grammatical basics, how to use non-finites, relative pronouns, and conjunctions, and other phrases, you will be able to edit your language in your mind before you write. So this knowledge is very important. The next point, write in 3 paragraphs. First, opening short para, telling what the graph or chart is all about. Just in 1 or 2 sentences, you write the first para. Second para, describing the whole graph or chart. That is the main para, second para. Third para, giving an overall view in brief. This will be the last para. Write percent after a number. For example, 20%. You will write like this. Now you can write per and cent separately, or you can write percent as a single word. Both are acceptable, both are correct. Percentage comes after words like the, or this, that, etc. Both, this is very important to know, both percent and percentage are followed by preposition of. So these are the important points which you have to keep in your mind. Dear students, अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. ये जो वीडियो है ये एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन पार्ट 2 पर आधारित है. जो पार्ट 1 में मैंने एक बहुत सिंपल और बेसिक बार ग्राफ एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे लिखा जाना चाहिए. यहाँ पर 2 पाई चार्ट्स हैं जो कि एक तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं परसेंटेज वाइज बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कि वो किस तरीके से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी क्या परसेंटेज है. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसे समझिए. पहले हमें ये देखना है कि हमें जो फर्स्ट पैरा है वो कैसे स्टार्ट करना चाहिए. ये पाई चार्ट पब्लिक स्कूल्स के लिए है, ये पाई चार्ट गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है. These 2 pie charts show a comparison how students of public schools and students of government schools indulge in different kinds of activities. ये आपने फर्स्ट पैरा लिख दिया इनको बताते हुए कि क्या ये दोनों पाई चार्ट्स बता रहे हैं. फिर शुरू कीजिए नेक्स्ट पैरा. According to the latest survey, 23.60% of public school students watch television in comparison to 42.40% of government school students. परसेंट को आप एक साथ भी लिख सकते हैं और पर और सेंट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है. However, the percentage of public school students spending their time on cell phones because of their easy reach or access is another synonym of this reach. You can use this one. आप इसे इस्तेमाल करते हैं. To them is higher than those of government schools. In the former case, in case of students of public schools, in the former case it is 52%, and in the latter means in case of government school it is 31.80%. As regards the participation in outdoor games, it does not show or reveal एक दूसरा सिनोनिम है show का, आप दोनों में से एक यूज कर लीजिए. much difference. It is 7.80% this segment and 8.50% this segment in case of public school students and government school students respectively. तो हमने इस प्रकार 1, 2, 3
3 सेगमेंट्स की कंपैरिजन कर दी है परसेंटेज वाइज। अब 4th सेगमेंट क्या है, वो है इंडोर गेम्स। बट द पार्टिसिपेशन इन इंडोर गेम्स नोटिसेस और विटनेसेस एक दूसरा सिनोनिम है नोटिसेस का, आप एक यूज कर लीजिए। अ डिफरेंस ऑफ 5%, which means the students of government schools take more interest in indoor games than those of public school ones. This is a difference of 5%. तो इन दिस वे हमने इस प्रकार 4 सेगमेंट्स कंपेयर कर दीजिए। पहला सेगमेंट था वॉचिंग टेलीविजन, दूसरा था यूज ऑफ सेल फोन्स, तीसरा था पार्टिसिपेशन इन आउटडोर गेम, फोर्थ का है इंटरेस्ट इन इंडोर गेम्स। नाउ कम टू द 5th सेगमेंट, which is creative activities. Right. What are the creative activities? Activities like painting, sculpting, photography, and many more. Right. The interest in creative activities by both the categories of students is meager or insignificant. वो जो इंटरेस्ट है क्रिएटिव एक्टिविटीज में कोई ज़्यादा नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही कम है। इन केस ऑफ पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स इट इज 3.60%, दिस वन, एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट schools it is 1.30% only, this one. The last segment related to weekend getaways. ये जो लास्ट सेगमेंट है कौन सी है, वीकेंड गेटअवेज, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेगमेंट। शोज और इंडिकेट्स एक दूसरा सिनोनिम है, आप दोनों में से एक यूज कीजिए। दैट द स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक स्कूल्स ओनली कैन अफोर्ड short visits to the spots in their vicinity for relaxation and recreation, whereas in case of government school students it is absent. कारण क्या है? Because of their socio-economic constraints, it is merely 2% in the former case, though. हालांकि weekend getaways की जो पार्टिसिपेशन है, जो पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 2% है। अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे समअप करना है इन दो पाई चार्ट्स को। हमने क्या स्टडी किया है, क्या एनालाइज किया है, तो हमें ये लास्ट पैरा कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आप ये समझिए। दीज टू पाई चार्ट्स दस ओवरऑल प्रेजेंट और डिस्क्राइब एक दूसरा सिनोनिम है, दोनों में से एक यूज कीजिए। अ पिक्चर दैट ड्यू टू obvious reasons the percentage of students watching television and using cell phones is higher than all the other activities, since these two activities leave very little time for students to pursue other activities. ये दो चार्ट्स पाई चार्ट्स ये दर्शा रहे हैं, कैसी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो दो एक्टिविटीज़ है वॉचिंग टेलीविज़न और यूजिंग सेल फोन्स, इनकी परसेंटेज दोनों स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक स्कूल के और गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों की परसेंटेज हायर है। क्योंकि जो और वो परसेंटेज हायर होने की वजह से, उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं बचता कि वो दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें, उनको परस्यू कर सकें। ये हमने स्टडी किया है। तो इस तरीके से हमें एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये अवश्य लर्न किया होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए जिस समय आप कोई एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उन्हें समझिए। फर्स्ट पॉइंट है, अंडरस्टैंड द गिवन ग्राफ और पाई चार्ट एंड मेक एन ओवरव्यू इन योर माइंड। पहले आप बार ग्राफ को या पाई चार्ट को समझिए, फिर उसका एक ओवरव्यू माइंड में बनाइए कि वो किस पर है, क्या कंपैरिजन है, फिर आप उसको लिखना शुरू कीजिए। सेकंड पॉइंट है, organize the relevant content correctly, appropriately and logically, highlighting the key
features I mean. This is important. Organizing, there should be that the whole thing should give an integrative, एक look ऐसी होनी चाहिए जो preceding sentence है और following sentence है वो उनमें continuity होनी चाहिए. Organize एक पूरा यानी analytical description जो है एक integrative look देनी चाहिए. The next point, use a range of good vocabulary with correct spellings. Important. Avoid repetition of a word. If possible, use its synonym. एक वर्ड है या कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार उनको रिपीट मत कीजिए, उनके सिनोनिम्स यूज कीजिए. एक ही वर्ड को बार बार या कुछ वर्ड्स हैं उनको बार बार यूज कर रहे हैं तो वो एक बोरिंग लैंग्वेज, डल लैंग्वेज. सिनोनिम्स यूज करेंगे तो एक लैंग्वेज में वैरायटी आएगी. तो सिनोनिम्स यूज कीजिए, रिपीटिशन को अवॉइड कीजिए. फॉलो करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन. पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर यू हैव टू टेक कॉमा कहाँ लगाना है, ठीक है, कहाँ कैपिटल लेटर है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है. यूज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग वर्ड्स टू कीप वेरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ईच सेंटेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये एक अगर आपकी अच्छी पकड़ है ग्रामर पर, साउंड नॉलेज है, आप जानते हैं डिफरेंस अमंग सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज को एडिट कर सकते हैं अपने माइंड में लिखने से पहले. और लिंकिंग वर्ड्स यूज कीजिए. रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए, नॉन फाइनाइट्स हो गए, कंजंक्शंस हो गए, कनेक्टर्स हो गए, तो उससे एक अच्छी लैंग्वेज आएगी. हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होना चाहिए कि सारे सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. नहीं, स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए लैंग्वेज की. नेक्स्ट पॉइंट, राइट इन थ्री पैराग्राफ्स. फर्स्ट पैरा ओपनिंग शॉर्ट पैरा टेलिंग व्हाट द ग्राफ और चार्ट इज ऑल अबाउट. किसके विषय में है, एक दो लाइन में वो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए और ओपनिंग पैरा दे दीजिए. सेकेंड पॉइंट है सेकेंड पैरा डिस्क्राइबिंग द होल ग्राफ और चार्ट. अब जो भी कंपैरिजन है, जो भी की फीचर्स हैं, जो भी परसेंटेजेस हैं, वो सब आप उसको प्रॉपर ऑर्डर में आप ऑर्गेनाइज कीजिए और लिखिए उन्हें. थर्ड पैरा गिविंग एन ओवरऑल व्यू इन ब्रीफ आई मीन. ठीक है, ओवरऑल एक व्यू दे दीजिए 2-3 सेंटेंसेस में, वो आपका लास्ट पैरा होगा. नेक्स्ट पॉइंट, राइट परसेंट आफ्टर अ नंबर. फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखना है, 20%, 10%, लाइक दिस. परसेंटेज कम्स आफ्टर वर्ड्स लाइक बी और दिस दैट एटसेट्रा. परसेंटेज आप इसको द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, दिस परसेंटेज, दैट परसेंटेज. बोथ परसेंट एंड परसेंटेज आर फॉलोड बाय प्रपोजिशन ऑफ. दोनों के बाद ऑफ आएगा. 20% ऑफ, द परसेंटेज ऑफ. और परसेंट आप ध्यान रखिए, ये एक वर्ड भी में भी लिख सकते हैं, परसेंट मिला के, पर और सेंट मिला के एक सिंगल वर्ड में, और पर और सेंट को अलग अलग भी लिख सकते हैं. ये दोनों मान्य है, एक्सेप्टेबल है. इस तरीके से एक अच्छा एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन आप लिख पाएंगे. ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिए. I hope that you will be able to write a good analytical description in future if you keep all these points in your mind. मुझे उम्मीद है कि एक भविष्य में एक अच्छा एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे. बस इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिए. डियर स्टूडेंट्स, I hope you must have definitely found this video beneficial. If yes, like and share it. Please don't forget to hit the button, subscribe. Make sure that you press the bell icon on all so that you could never miss an update. Good luck, stay healthy.